Hello, guys. How are you? Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और भाई बवाल मच रहा है बिफोर द फुटबॉल इज बैक एंड एज मच एज इंटरनेशनल फुटबॉल इज समथिंग वी कवर, लेकिन हम सब जानते हैं भाई क्लब फुटबॉल अलग ही लेवल होता है व्हेन इट कम्स टू द अट्रैक्शन. लेकिन भाई ये तो इंटरनेशनल ब्रेक शुरू होने से पहले ही और रादर खत्म होने के बाद ही जल्दी से बहुत सारा न्यूज आ गया अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. ऑफ कोर्स उनका मैच ब्राइटन के साथ, तो भाई उसके लिए ऑब्वियसली आई हैव अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इन द हाउस. बट इवन द मिलान डार्बी और भाई एफपीएल मैनेजर्स डू नॉट फॉरगेट भाई, वेट टिल एंड बिकॉज हम डिस्कस करने वाले एफपीएल टिप्स एंड पॉइंटर्स है आज. प्रॉपर टिप्स एंड पॉइंटर्स है, तो आज वाला मिस मत करना एवरीवन. और ऑफ कोर्स बाकी सारे मैचेस है. एंड यस, चेल्सी का मैच तो बाय डिफॉल्ट डिस्कस ही करेंगे. विल बी हैविंग अ चेल्सी पैनल एज वेल. जॉइन अस अपार्ट फ्रॉम माय सेल्फ. लेकिन लेट्स गेट इन यार. भाई अंशुमन, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हाल है भाई? मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. Absolutely अच्छा तो नहीं fine, बोल भैया, सकता हूँ नहीं? absolutely. मैं बिल्कुल मजे में हूँ. फाइनली आई एम सीइंग थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू सी. ठीक है, अब थोड़े बहुत चेंजेस अगर ऑन पिच भी देखने मिल जाए तो मजा आ जाए. ठीक है, व्हाटएवर द सिचुएशन हैज बीन ऑफ द पिच, उसको हमने अच्छे से डील किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ग्रीनवुड सागा तो बिल्कुल इट वाज रबिश, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बट आफ्टर दैट जो भी अभी हुआ है, ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए था, बट जो भी अभी हो रहा है, आई थिंक द मैनेजर एज वेल एज द मैनेजमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो अभी सही से कर रहा है, डील कर रहा है. आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है. बट हाँ, डेफिनेटली एक्साइटेड. ओल्ड ट्रैफर्ड पे जब भी मैच होता है, ऑब्वियसली वेरी वेरी एक्साइटेड. रिजल्ट चाहे जो भी हो, एंड ऑफ द डे, but we are 31 match unbeaten at this point of time at our own ground, so obviously feeling confident. बिल्कुल. And of course here we have Nathan in the house as well. Nathan, मतलब people are looking forward to Anshuman's and Nathan's rants is what I'm assuming. But Nathan, knowing yourself, knowing even the guys like David Beckham has been put down by the manager, the legend Sir Alex. Is Erik Ten Hag? Firstly, how are you feeling about how he's going about the business, and what is your general opinion about what's going on in Manchester United? First of all, good evening, guys. Let the heads roll. I don't care about any of these players. I don't. I've spent my whole life. I spent my whole life idolizing a lot of players. But what I tell fans nowadays is there is a saying that I've heard many people say, and it is never meet your idols. And there's a reason for that. You don't really know what's going on. You see them for 90 minutes a day, 1 day a week. You don't know what's going on. You have no idea anything about them. They have complete control over what they show you, especially during this time. Off with their heads, all of them. I don't care. 18 months ago, I went on Giants channel and I said I would sack 9 of them and keep De Gea and Ronaldo. So I'm going to stay the same thing. If they don't make the cut, they don't make the cut anymore. Bring on the kids. I've been telling Anshuman the same thing. I'm like, Anshuman tells me this person's not ready, that person. Bro, I don't care. Let's get relegated. Get the owners out, get the players out. I don't care. I'm ready to go to the championship because I'm fed up of how my clubs run. I'm ready to go to the championship. My head's gone. People put all these players on a pedestal. The manager, first of all, excuse me, I've come to realize something. You have to let the manager manage. This is not the feeling business. This is the sports entertainment business. You want a feelings business? Go work at Hallmark or some TV channel. I couldn't really be bothered because there's not enough ruthlessness. The players rule the roost. Ankit bhai, I think you're very familiar with it at your club. Not too long ago, a famous manager, ousted. Yeah. Safe to say, people you idolize. Safe to say, by people we thought were all-time greats. Safe to say. Yeah, none of these players are all-time greats. They can all go. I don't care. Star boy, this number 7, number 25. I don't care. They can all go. Manager has to manage. Club above all. नहीं, it's well said. It's very well said. In fact, I relate to it absolutely. हम बोलते ही है भाई, club above everything, and that is something जो हम बोलने के नहीं बोलते. We all know that, and especially अपने देश में, again, I know that a lot of people are watching from India or the Asian subcontinent. Somewhere down the line, we kind of give individual stars more weightage than why we love the star, and that's because of the sport, and that's something that we forget. And the sport
first basically is driven by the club, and then the club kind of makes the stars that it makes because of the opportunities that it gives. So somewhere online we get that totally what Nathan is saying. And again, anyone disagrees, big up to everyone who is commenting here, but let us know your views, because अभी कहीं ना कहीं स्प्लिट हो गया. बाय द वे, नियॉन यूके, थैंक्स फॉर द सपोर्ट यार, ऑलवेज हेल्प्स फॉर श्योर. एंड यस, यूनाइटेड फैंस, मुझे पता है गोइंग थ्रू टफ टाइम, लेकिन भाई हम लाइक जैसे नेतन ने बोला, चेल्सी फैंस आर गोइंग थ्रू इट फॉर क्वाइट अ वाइल. और कहीं ना कहीं मैं भी ये पहले बोल चुका हूँ दैट we don't want to go through the same, say few years that United have already gone through, of course, in the Moyes times as well as basically latter years as well. लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही क्लब्स कहीं ना कहीं मतलब ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ यार, बोलना पड़ेगा अंशुमन, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी, भाई दोनों अभी ऑल द अदर क्लब्स आर एंजॉयिंग, और प्रॉपर बैंटर मिल रहा है यार अपने को. मतलब आई नो कहीं ना कहीं वी डोंट डिजर्व दैट बिकॉज इट्स वर्क इन प्रोग्रेस अगेन, एंड यूनाइटेड तो एटलीस्ट हैज वन अ कप लास्ट सीजन. लेकिन इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग जो नेथन ने बोला, मतलब देयर आर सम इश्यूज इवन एट द क्लब लेवल यार, क्योंकि यार आई गेट दैट चलो इंडिविजुअल ले लेते हैं एंटनी का as well as Mason Greenwood का, it is kind of very individual specific rare scenarios, but Sancho का भी चलो उसमें बोल देते हैं. But the fact that the same thing happened with Ronaldo a few months ago, मतलब is it Erik ten Hag का जो है attitude because the Dutch manager जो brashness होती है वो है, or do you think the fact is there is something wrong at the club level generally? क्योंकि आप देखो even recruitment there are a lot of issues, ownership there are issues, तो मतलब generally there are issues, हम इससे तो मुक्त कर नहीं सकते, right अंशुमन? भाई देखो, बिफोर एरिक टेन हाग टुक ओवर, ठीक है, जो मेजॉरिटी जो कोड था दैट वाज बेसिकली, अगर देख के चले उस तरीके से, तो इट वाज ओले वाला कोड. ठीक है, गो आउट, एक्सप्रेस देम योरसेल्व्स, ट्रेनिंग में जब मन करे आए, उस तरीके से आए, नहीं आए, हंसी मजाक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. ठीक है, एज यू सेड, ये ब्रासनेस वाली जो बात है, ही इज स्टिकिंग टू द पॉइंट, और इसके लिए सारे सेम है. ठीक है, इफ दिस गाय कैन बेंच द लाइक्स ऑफ रोनाल्डो, जो डेहिया को क्लब से निकाल दे, ठीक है, उसको वो सांचो को क्या समझेगा? ठीक है, वो सांचो को क्या समझेगा? एक चीज मैं क्विकली यहाँ पर जस्ट डेविल्स एडवोकेट में बोल रहा हूँ. आई गेट दैट. अगेन मैं तो भाई डच फैन भी हूँ, फॉर पीपल हु नो एरिक टेन हाग, एंड जनरली मैं बोलता हूँ, जनरलाइज नहीं करता हूँ, लेकिन डच के केस में होता है. लॉट ऑफ मैनेजर्स, इवन लुई वैन गाल वाज एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, एंड लॉट ऑफ देम, भाई आप देखो कोमन एंड व्हाट नॉट, कहीं ना कहीं the way they say do certain things, like even David De Gea, I think he could have got a better send off. Don't you agree with that point? ना, हाँ, ये बोलना चाहिए था उसको कि 2 महीने पहले बता देना चाहिए था कि you are gone out of the club. Exactly. But that comes down to the board. ठीक है, because the manager cannot go out and say कि भाई एक काम कर, तू जो है ना क्लब से बाहर जाना. ठीक है, even without knowing that who is going to come in, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है ना हमारे पास. इट्स नॉट लाइक सिटी कि मतलब ग्वार्डियोला को पता है कि कैंसेलो जाएगा तो उसके बदले कौन आएगा. ठीक है, इफ गुंडोगान इज लीविंग, हु दे वांट. ठीक है, तो वो ऐसा तो है नहीं. नो, नॉट अ सिंगल प्लेयर इन द लास्ट 1 year, मतलब लगा लो ये 3 विंडो हो गए ना. ठीक है, 3 विंडो हो गए, नॉट अ सिंगल प्लेयर हैज बीन स्काउटेड. ठीक है, ये क्या बोल रहे हो? फिर गाली देता हूं तो फिर लोग there are larger problems, simple as that. There are definitely larger problems. नहीं, फिर लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई मोटा मैडनेस है, घंटे का मैडनेस है. क्लब की मां की आंख कर रखी है मैडनेस. एक साल तुमसे 10 मिलियन, तुमसे 20 मिलियन की साइनिंग नहीं होती. ठीक है, और अगले दिन तुम पीआर चलवाते हो इवान फर्ग्यूसन के, और उसके बाद पीआर चलवाते हो कवारशेलिया के. मतलब तुम चूतिया बना रहे हो क्या? मतलब इतना भी नहीं. ठीक है, थोड़ा लिमिट में फेंको. फेंकना ही है, थोड़ा लिमिट में फेंको कि थोड़ा सा लोग जो है ना इंटरेक्ट भी करे कि चलो ठीक है यार, उसको बुला लिया तो चलो ठीक है, उसके साथ लिंक कर दिया. बट ये इस लेवल का फेंकते हैं. यहाँ पे तुमसे अहमदाबाद साइन करने में तुम्हें डेडलाइन डे लग गया. ठीक है, तुम्हें 5 मिलियन का गोलकीपर साइन करने में तुम्हें 5 हफ्ता लग गया. ठीक है, तो इनसे नेगोशिएशन होता नहीं है. फाइनली दे हैव ब्रॉट इन समबडी लाइक हार्ग्रीव्स. उसने चलो ठीक है, एटलीस्ट उसने वेजेस का सही किया इस बार. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि हम जो भी प्लेयर को लेके आए हैं वी आर गिविंग लाइक अनवांटेड वेजेस. चाहे वो ओनाना हो, ठीक है, माउंट का भी है 200,000 है प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड है. भाई तुम खेलोगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं खेलोगे नहीं मिलेगा. Look at the contracts that we have given under Muta last year. Anthony was like making what, 20,000, 25,000, something like 30,000. ठीक है, उसको दे दिया उठा के 200,000. किस खुशी में? मतलब खराब बट रही है यहाँ पे. तो मतलब वो जो बार्तमी वाला सीन लगा जो बारसा से, आई नो on a lower scale but kind of it's a similar problem that Manchester United got into.
सिमिलर है. It's just the thing is भैया, उनको अपने जेब से पैसे नहीं डालने ना. That's the thing. उनको अपने जेब से पैसे नहीं डालने. वो उनको क्या है, उनका है कि भाई जो हमारे पैसे उन्होंने उसी को डाल दिए. They have not spent a single penny. लोग बोलते हैं अरे भाई तुमने इतना खर्चा कर दिया. यार हमारा नेट स्पेंड पूरे विंडो का 120 मिलियन है. 120 मिलियन का विंडो है, ठीक है, जिसमें से वी आर आल्सो गोइंग टू गेट मनी थ्रू न्यू स्पॉन्सर, वी आर गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम यूसीएल, टीवी मनी, इतना कुछ है, एंड स्टिल वी आर एबल टू स्पेंड जस्ट 120 मिलियन. तो वही की बात है. प्लेयर पावर, जो कमेंट में भी मैंने देखा, प्लेयर पावर चाहे वो रोनाल्डो या सांचो है, इफ यू थिंक दैट यू कैन जस्ट गो आउट एंड डू थिंग्स योर वे, निकलो. सिंपल सी बात है. जिस बंदे ने को 30 सेकंड्स लेट होने पे बेंच कर दिया, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज, मतलब पूरा सीजन अकेला वही खेला एक तरीके से. अगर बोले इन टर्म्स ऑफ गोल्स, मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई एक बंदा जो है वो टीम को कैरी करता है, बट इन टर्म्स ऑफ गोल्स ही वाज स्कोरिंग द गोल्स. ठीक है, तो वही वाली बात है. वेदर इट्स रोनाल्डो, वेदर इट्स सांचो, वेदर इट्स जो भी है, इफ दे थिंक, ठीक है, दे थिंक कि भाई ये जो चीज है वो तुम मैनेजर से बड़े हो या क्लब से बड़े हो, यू विल गो आउट. ठीक है, कल जो स्टेटमेंट दिया है उसमें देयर इज नो फिक्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न. ठीक है, उसमें बस बोला है कि ही विल ट्रेन ऑन हिज ओन. कब तक ट्रेन करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किसी को नहीं पता. ही वाज एट कैरिंगटन टुडे. ठीक है, सांचो, मतलब एक होता है ना भैया कि मतलब दिस इज नॉट जस्टिफाइड फॉर एनीबॉडी, चाहे वो मेसी और रोनाल्डो हो, बट वंस यू कैन से कि भाई उन्होंने इतना अचीव किया है कि उनके बाद ईगो पे आ गई. ठीक है, दे हैव वन इट अंडर एवरीबॉडी. तो उनका मुझे एक बारी को, चलो वो भी गलत है, बट एक बारी को मैं ले सकता हूं कि भाई चलो ठीक है यार, दोस गाइस हैव वन इट ऑल. मे बी डिफरेंसेस है विद द मैनेजर्स आइडियोलॉजी, नहीं कर पा रहा है जस्ट, फेयर इनफ. एज ऑफ 37, 36, he wanted to try something else. He doesn't want to be on the bench. जीता कुछ है नहीं, इंग्लैंड की तरफ से खेलता नहीं, फिट रहता नहीं, डिप्रेस रहता है, सोलर. इसी मैनेजर ने भाई पिछले साल 3 महीने की छुट्टी पे भेजा इसको, just to get his head right. ठीक है, every United fan supported him, the manager supported him, the teammates supported him, every player, every fan supported Sancho. कि भाई behind the scenes क्या चल रहा है with a player's head, you don't know. ठीक है, and this guy comes out and he puts up a essay, scapegoat. अबे देखो कौन scapegoat बना रहा है, तेरे से खेला जाता नहीं. ठीक है, आया मैं सांचो जर्सी पर, तेरे से खेला नहीं जाता. You are still not adapting to the physicality of the Premier League. तेरा सिटी पे भी यही सीन था. तेरा सपोज करो साउथगेट जैसा नल्ला मैनेजर जो बोल रहा हो, ठीक है, सांचो के साथ प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है. मतलब आउट ऑफ ऑल मैनेजर्स, एंड ही इज नॉट द ओनली वन. मतलब डॉर्टमंड में भी प्रॉब्लम्स रहे हैं. आई थिंक दे हैव कम आउट एंड सेड इट. ने भी बोला है, ठीक है, साउथगेट ने भी बोला है. एक बारी को चलो, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि यार ऑल ऑफ अ सडन टेन हाग, ठीक है, 3 महीने के लिए पेड वैकेशन पे था तू भाई लास्ट ईयर, एंड देन पीपल से कि भाई एंटनी ने इतने मिनट्स खेले, उतने मिनट्स खेले. तो यार एंटनी जैसा तू सिर्फ डिफेंसिवली भी अगर हेल्प कर देना अपनी टीम को, तो भाई देखो मैं स्टार्ट करा दूं, तेरे से ज्यादा 10 मिनट में जो है ना पेलेस्ट्री कर जाता है गेम में. जो तूने गेम्स खेले हैं जिसमें तू 75 मिनट्स 80 मिनट्स भी खेला है, उससे ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट में पेलेस्ट्री कर जाता है पिच पे. तो डोंट गिव दिस कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली. सिंपल सी बात ये है. तो प्लेयर पावर को ऐसे ही खत्म कर सकता है मैनेजर, एंड द क्लब इज बैकिंग द मैनेजर, व्हिच इज अ गुड थिंग. ये हमने पहले देखा है, व्हेन मोरिनियो ट्राइड टू डू इट, मोरिनियो वाज सैक्ड. ठीक है, जब Mourinho said it as well. Mourinho said it as well. Clearly बोला था. Zlatan also kind of indicated that directly or indirectly. भाई लेकिन भाई मैं I know मैं काफी सारे comments नहीं दे रहा. I was just waiting for Anshuman to end. I'm taking a few comments before we go to Nathan. भाई big up to everyone. जो भी लोग जुड़े भाई, we can easily triple this number. कैसे भाई? सब लोग एक लाइक बटन दबा दीजिए. एक बार दबा दीजिए लाइक बटन quickly so that YouTube algorithm pushes it. और भाई बहुत सारा हमने टॉपिक्स डिस्कस करना है आज. Of course, we have started with the United, problems यहाँ पर. We'll come to the United match. We'll come to obviously थोड़ा बहुत Chelsea as soon as Chirag joins us. Well, बीच में we'll be discussing Liverpool and the other teams. But of course, there's a Milan Derby, FPL and whatnot. तो भाई जो भी लोग out of topic पूछ रहे या relevant questions which are going to be discussed later on, मैं start कर रहा हूँ and I'm taking as many comments as possible. Meanwhile, लेकिन I love the panel for sure. Utkarsh, big up to Utkarsh, Pudin, all the members here. Let's get on the lights, guys. Everyone जो देख रहा है, मैं थोड़े क्वेश्चंस इसके बारे में भी स्टार करके रखा हूँ.
before I get to Nathan. Uh, Media will always hype United. Imagine what club's fifth choice centre back gets so much media attention. I'll frame it different way. Friendly neighborhood. I'll say that. देखो, firstly, in case of Sancho, मैं एक्चुअली खुद डाउन प्ले किया था भाई. एबीएफसी मेंबर्स नो इट. हम लोग का ग्रुप चैट चलते रहता है रोज. और मैंने ये बोला था, मैं कहीं ना कहीं यूनाइटेड को भी, इफ यू ऑल रिमेंबर, जब सीजन शुरू हुआ था, मैंने बोला था यूनाइटेड विल बी फाइन. कहीं ना कहीं यूनाइटेड एंड इवन चेल्सी, व्हेन वी आर गेटिंग बैक देयर, हम वी आर काइंड ऑफ. एंड वो सर्वे बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ. कपल ऑफ मोस्ट हेटेड क्लब्स है जनरली इन द वर्ल्ड, राइट, एज मच एज फैन फॉलोइंग भी है, ठीक है. तो वो होता है बाय डिफॉल्ट. लेकिन साथ साथ में मैं देख रहा था, बिकॉज ये बंदा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है एंड आपका चेंजेस इन मिड जो कोर है कम है, यू विल बी फाइन. इफ यू सॉर्ट आउट दिस सैंचो सिचुएशन, इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान मैं जब देख रहा था, मैं बोला यार, इफ यू सॉर्ट आउट दिस सैंचो सिचुएशन विल बी फाइन. अब सैंचो की गलती क्या है, कॉन्टेक्स्ट देता हूं फॉर पीपल हु डू नॉट फॉलो मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़ एज मच. बेसिकली ऑब्वियसली सैंचो की गलती रही, ही केम आउट एंड सेड दैट स्केपगोट एंड व्हाट नॉट, उसने ट्वीट डाला था, ठीक है. उसके बाद में थिंग्स वर बेटर, वो बात कर लिया ऑन द ट्रेनिंग पिच और व्हाटएवर. प्रॉब्लम इज दैट यूनाइटेड क्यों अलग रख रही, बिकॉज जैसे लोग करते, कुछ गलती करते तो फर्स्ट आप गलती करते तो बाद में एक सॉरी वाला भी मैसेज भी डालते हो. दैट इज अ नॉर्मल, एक एक प्रोफेशनलिज्म बोल दो, क्योंकि आई डेफिनेटली बिलीव ही डिड समथिंग अनप्रोफेशनल. टेनहा को भी जब पूछा गया था इन द इंटरव्यू, I think he was just being himself. Because he was asked, he said something. So he could have got a controlled answer from himself, but that is not how Ten Hag is, and that's what हम discuss कर रहे हैं यहाँ पर. तो I think यहाँ पर गलती obviously शुरुआत हुई थी सैंचो से ही, in my opinion, and then he did not correct it fully, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सपेक्ट करी थी. That is why he is there. तो आई ऑलमोस्ट फील कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक हफ्ते तक तो प्रोटेक्ट करी थी सैंचो को, और बिकॉज इज डन दिस राइट नाउ, आई थिंक यहाँ पर हाइप नहीं है. अदर थिंग्स आई एग्री, फ्रेंडली नो बर्ड, बट what about you, Nathan? Do you think it's because it's Manchester United these things are blown out of proportions? I think even in the case of Mason Greenwood or Anthony, I think compared to all the other things, I agree. Harry Maguire is a scapegoat. That I agree. But other things, Nathan, do you agree that it is this time it's a problem with the players in particular, and that is why you started the way that you did? The first 4 games, I don't see any difference from last season. That is why I wasn't interested in the Onana signing, because my explanation was very simple. Onana pushes the lineup high, he lobs the ball in, fair enough, yeah, good distribution. Let's say it falls in the midfield. No one in the midfield can maintain the ball. What is the point of playing a high line and then we give the ball to the opponent anyway? So for me, not a lot has been different since we have been wasteful in the midfield as always, not creating chances on the wings. It's not very different from last season. What my hope was, we take the Onana money, we put it somewhere where we need it this season, sign De Gea to a short-term contract, get a good goalkeeper in next season for sure, because I think De Gea had to be phased out as well. As you know, I love David De Gea. Anshuman also knows. I've never made that a secret. It will never be a secret for me. Easily our most important player in our toughest time in the last 50 years. I'll never ever forget the contribution he's made. We have had greater players, some will say, but for me, I have a undying loyalty to what he has done in the last decade of what can be a horrific decade. Exactly. You needed a change, but the way that the exit happened, I was shocked. Exactly. So my issue with the money is that last season with the leaked Murtaugh bar incident, Murtaugh basically said we won't have enough money this season. So what I didn't understand with Ten Hag is why bring in Mount and Onana when you have limited funds? Get in the number 9, get in the Casemiro replacement. And the most puzzling thing was Fabrizio said we were a shoe-in for Kim Min-jae. Like he kept saying our name. We are in for it. We are in for it. We spent 20 million more on buy Mount first, and I'm confused. I'm like, for a team that has limited funds, something that is 40 million you don't buy, but something that is 60 million you buy. And I'm like, this doesn't sound like a club which has less money. And then when Kim Min-jae went to buy, and I was like, what's going on here? I thought we had money. That's why we bought Mount first. And then I was like, what is happening here? Because this is Ten Hag's fault. I'm sorry. But this is definitely Ten Hag's fault, because Fabrizio said we were a shoe-in for Kim Min-jae. And now Varane's injured. Martinez and Lindelof have come back before him. But we don't have a right-footed centre-back, which Kim Min-jae would have been. And I think in transition,
Varane would be phased out, and Kim Min Jae would be the permanent that sided centre back. So there are issues that you can blame Ten Hag for, but getting these bloody renegade players, no, is not one of them. These people had to be checked, no, from last season. When it comes to the current squad, no, I'm not for the escaping Mason Mount and the Onana memes. I'm not here for that. Scapegoat all the other players that have sucked for the last 18 months. Then I will hear your Mason Mount and Onana jokes. Yeah, you had to change that. So that's what I think Nathan referred to as one minute motivation. It's about I was spending that money confused. Yeah, I was so confused. I was like, 40 better. million more buyout clause. Buyout clause means you don't have to argue with these people. You can get the wages down to what you want for Kim and Jay. Maybe incremental as the years go. Anything, in terms of we had less money because Murtaugh told us, or Arnold, one of those clowns, told us last season that we're going to have less money. So I was like, what is going on here? Do we have money that we are not aware of? Are we going to do another Casemiro Anthony where suddenly 200 million show up in a week? Didn't happen. And now we're short. Again, we're short. Another season, we're short of players. See, again, like I can see a lot of chat saying that, come on, as in we are overreacting, this, that, and all. Listen, again, I repeat, I myself have said that Manchester United will be fine, but it's just that there are off-pitch issues, plus the fact that they could have done a couple of cases better. Like, obviously, a no-brainer is the Maguire situation. With all due respect, the fact is Maguire is there because of the fact that he did not want to exit, and that is how things happened because financial. You could have used that money better. Like you're with Maguire and Evans as your fourth and fifth choice, whether both of them would not have been there, that money could have been invested. Thank you. Sorry to interrupt you, Ankit. In the end, we replaced Kim Min Jae for Johnny Evans. Thank you. I forgot to mention That's that part. the reason, exactly. Thank you very so much. To some extent, I agree. And again, for people wondering that Nathan is supporting David Dia, I don't think Nathan is saying that David Dia should have been the goalkeeper for Manchester for the next 5 years. The point is the transition that Money is allocation. happening. Exactly. You Money need to have allocation. it. And again, there is no harm if David Dia right now is not playing anywhere. As in, what is the issue of him being a second choice goalkeeper for Manchester United? I'm just saying, just putting it out there as a plan B, right? You could always have thought that, because at the end of the day, if there are off-field issues, people like David Dia maybe would have helped off the pitch. I'm just guessing. Those are things. I know that towards the end they got Amrabat and whatnot. But यहाँ पर मैं कुछ और star किया questions आपको. Before you read the star comments, just to piggyback over that comment, Ankit. Now people are panicking because Onana might be going for AFCON. I'm like, this is brilliant. So the Trump in the hand is also going to तो go. अभी कौन है second choice goalkeeper कौन है? Altay Bayindir. He's the one who's Altay come right Bayindir. from the Galatasaray, right? Tom Eaton, I don't know when he'll be Sorry. fit. Maximum Tom Eaton. I thought Tom Eaton had a good preseason. I was actually surprised because I've not really seen much of him in a long time. But yeah, Altay Bayindir is देखो आदित्य यहाँ पूछ रहे, don't you think this will impact the club badly? Another big amount signing failed plus no resale value for Sancho. I think it's just not Sancho. I think Anthony का situation भी थोड़ा हमें discuss करना ही है before we get to the matches, guys. I know that we are discussing this for a lot of time, लेकिन I think this requires a lot of discussion. Quickly again, that money aspect जो है, Maguire to some extent, Sancho for sure, Anthony for sure अभी के लिए मतलब Anshuman, what is the silver lining? अभी क्या आप क्या करना चाहोगे? If you were the person taking the calls right now, I know Anthony का अभी तक 100% proven नहीं है either ways, if what I understand. लेकिन knowing the Mason Greenwood situation, यहाँ पर भी क्रिस्टल क्लियर होना तो बहुत मुश्किल है, और बीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली आंसर करने पड़ेंगे. तो वुड यू बी लाइक, नहीं जनवरी विंडो आ रहा है, अगर सऊदी का विंडो ओपन है भाई सेल कर दो सऊदी को दोनों को, या आप बोलोगे नहीं वील कीप देम अराउंड एंड मेक श्योर दे आर टॉट अ लेसन एंड कम बैक, जैसे पास्ट में भी हुआ है विद सम मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड्स? नहीं, सांचो तो जाएगा भैया, देखो सांचो तो नहीं रुक रहा, ठीक है. वेदर वी गेट रिड ऑफ हिम इन जनवरी, वेदर वी गेट रिड ऑफ हिम इन समर, ठीक है, ही इज डन. He had his chance to apologize and just come back. मतलब zero common sense छोड़ो, 1% अगर common sense होता, he should have just apologized, get in the training. उसको पता है कि भाई अगले 4 महीने या even at least for 8 months he is going to be the short right wing player. Simple as that. ठीक है, थोड़ा भी अगर दिमाग लगा था, ठीक है, he just had to say sorry, चलो ठीक है हो गया, just tell me what I have to do. है ना? Simple as that. And to be very honest, एंथनी के साथ जो मेसन ग्रीनवुड वाला सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट इन माय ओपिनियन. ठीक है, लोग अब उससे एग्री करे ना करे,
ठीक है, one guy हाँ did मतलब not वो तो play अलग ही because लेवल का है मेसन ग्रीनवुड की सिचुएशन का, आई exactly एग्री for दैट. 18 months everyone saw what happened, and in this case he has denied it from day one. ठीक है, I'm not saying कि भाई just because he ये has वाला denied सिमिलर it टू इसका पार्टे मतलब सिचुएशन है जहां पर आपको कोर्ट विल काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ इट, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. तो एवरीथिंग मैं वही बोल रहा हूँ ना, इन. when it comes to United, तो यूनाइटेड के सामने ना सारे के सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं. पार्टी का एवरीथिंग वाज इन पब्लिक. ठीक है, एंड दैट वाज एवरीथिंग अगेंस्ट पार्टी. बट आर्सेनल वही है, फिर दे डोंट हैव द फिर वो आते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई तुम्हारे क्लब में ग्रीनवुड है, तुम पार्टी खिला रहे हो. हमने तो एक्चुअली सस्पेंड किया. वी डिड नॉट प्ले दैट प्लेयर फॉर 18 मंथ्स एंड नाउ वी हैव लोन्ड हिम आउट. अंडर प्रेशर ही चलो, बट वी हैव लोन्ड हिम. उसको हम अगले साल बेच देंगे, जो भी करेंगे वो अलग की बात है. सो सांचो इन माय ओपिनियन विल बी गॉन. ठीक है, और उसके हमें इजीली, आई एम नॉट सेइंग 70 वी कैन रिकवर, बट इजीली उसके 50 मिल जाएंगे. ठीक है, आई एम नॉट इवन वरीड अबाउट दैट. ठीक है, आराम से उसके 50 मिल जाएंगे. बट हाँ, एंटनी वाला केस है, अब वो कितना लंबा खींचता है, ये अगले 2 हफ्ते में भी खत्म हो सकता है, इसको खत्म होने में 2 महीने भी लग सकते हैं. ठीक है, when it comes to someone like Mason Mount या Onana, I'm absolutely happy that we have made the signings. ठीक है, डेहिया तो मेरा अगर बस चलता तो मैं 3 साल पहले फेंकता था. I know Ansuman's case वहां पर, I know his opinion definitely. हाँ, मैं कब से बोल रहा हूँ, मेरा बस चलता मैं 2018 वर्ल्ड कप के बाद फेंक देता उसको. अगेन मतलब मैं एज एन ऑपोजिशन फैन भी बोल रहा हूँ कि जाना चाहिए था, लेकिन द वे दैट यू मेक अ एग्जिट फॉर अ प्लेयर, वो है बस. मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इसको आखिरी दिन तक a player who has given you so many moments, so many years, of absolutely next level goalkeeping. ठीक है, उसने 5 साल 6 साल he was untouchable. ठीक है, लोग बोलते हैं 11 साल 12 साल, वो नहीं मानता मैं. ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड कप he has been absolutely mid table goalkeeper, that's it. ठीक है, 2019 से he has been mid table, सिंपल है. एक सीजन उसका अच्छा है वो रागनिक वाला, that's it. बट वही वाली बात मैं फिर से बोलूंगा कि he should have known it. ठीक है, बोर्ड को मैसेज कन्वे पहले करना चाहिए था. You just don't keep it going. एटलीस्ट उसके पास एक मौका होता है एटलीस्ट टू से गुड बाय इन फ्रंट ऑफ द होम फैंस. ठीक है, उसको तुम क्या बोलते हैं वो सेरेमोनी, वो मैच दो या ना दो, ठीक है, वो अलग की चीज है. बट एटलीस्ट ही शुड हैव सेड गुड बाय. आखिरी दिन तक पता ही नहीं लग रहा भाई. जब डेडलाइन जब खत्म हो गया तब पता चला कि अच्छा चलो ठीक है भाई, वी आर नॉट गोइंग टू गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वी आर साइनिंग अ न्यू गोलकीपर. ठीक है, और हमने इस रीजन से भी उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया बिकॉज नो वन वाज इन द मार्केट फॉर हिम फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो यूनाइटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर लाइक अच्छा चल ठीक है, इसको कोई ले नहीं रहा. ठीक है, वी विल जस्ट लेट गो ऑफ हिम. और उसके बाद अगर कोई हमें नहीं मिला, वी विल ऑफर हिम अ रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अंडर पीएल रूल्स, ठीक है, अंडर पीएल रूल्स हम 50% से ज्यादा कट करके उसको नहीं दे सकते थे. ही वाज ऑलरेडी ऑन ऑलमोस्ट 375,000 ऐसा कुछ था उसका, या 380 जो भी था. So we got Onana for like 140. ठीक है, तो यही था हमारे दिमाग में भी, यही चला था दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर डेहिया को कोई नहीं लेता और अगर हमें ओनाना नहीं मिलता या हमें कोई उससे बेटर कीपर नहीं मिलता, वी विल जस्ट डू वन थिंग, वी विल जस्ट से डेहिया वापस आ जा भाई, देखो हम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हम फिर से ट्राई करते हैं. बट वी गॉट अ कीपर इन ओनाना एंड आई थिंक ओनाना को मैं जस्टिफाई करूंगा नाउ दैट वी हैव अ स्ट्राइकर. फाइनली 4 मैचेस नहीं खेला, ही विल बी देयर फॉर टुमारोज गेम. ठीक है, पीपल हु आर सेइंग कि भाई चलो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, आई टोटली एग्री विद अभी 4 गेम में तक किसी का भी नहीं दिखा टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, एंड आई हैव डिस्कस्ड द किम मिन जे सिचुएशन पहले भी. ठीक है, किम मिन जे का सिचुएशन आई थिंक एरिक टेन हाग एंड द बोर्ड बोथ मिसमैनेज्ड. ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो सबसे पहली साइनिंग किम मिन जे की कर लेते, ठीक है, मगवायर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो बाद में जाके तुम्हें डिक्टेट करे. ठीक है, यू लेट मगवायर डिक्टेट यू. ठीक है, इतने टाइम तक उसको रख के अपने पास. अगर तुमने उसको सीधा तुम किम मिन जे लेके आते, मैनेजर ने पहले बोल दिया था लिंडेलॉफ इज अनटचेबल, इज नॉट गोइंग एनीवेयर. ठीक है, लिंडेलॉफ के बारे में ये पहले ही बोल दिया था आउटराइट. वो फोर्थ चॉइस था, जैसे नेथन ने एक्सप्लेन किया, यू नीडेड अ सेकंड/थर्ड चॉइस सेंटर बैक. एग्जैक्टली, वरान को फेज आउट करना ही. ठीक है, इस साल तो नहीं, बट अगले साल तक वरान को एनीवे फेज आउट करना था. एंड द नंबर ऑफ गेम्स दैट वी प्ले, उसमें इजीली किम मिन जे जो है ना, उसको हम टीम के साथ इंटीग्रेट कर सकते थे इजीली. सो आई थिंक वी मिसमैनेज स्ट्रेट अवे.
ठीक है, बहुत सारे 45 ऑप्शंस थे। आई million थिंक क्या नाम है वो, टोडीबो, ही वो लिंक विद हिम, वो लॉट सारे ऑफ options Pavard, when you have Pavard. you have एग्जैक्टली। Green available ना, you don't go for the likes of Pavard and Todibo, simple सी बात है। नहीं मतलब एवेंस When से you तो वो have भाई बेटर ही होते, विद No, ऑल ड्यू but then we रिस्पेक्ट, went for Evans, no Anshuman. Like, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन भाई पैसा नहीं बचा हमारे पास, you know, सिंपल सी बात है। Evans was basically बेली का रिप्लेसमेंट है वो, it's not even a replacement, वो हटाओ, you cannot compare इट्स मोर लाइक अ him injured स्क्वाड नंबर we बस still बेसिकली। exactly last day तक we were trying to get someone like Todibo or even Pavard, but हैरी मैगवायर फिर बोलते हैं कि भाई इसको अब्यूज क्यों मिलता है। आई डोंट प्रमोट द अब्यूज, बट जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ही शुड नॉट बी अब्यूज, तो भाई ही हैज ब्रॉट ऑन हिमसेल्फ, सिंपल सी बात है। ठीक है, फैंस यू कैन नॉट गो आउट एंड सबके बारे में तुम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बट यूनाइटेड हु सेज नो, अरे भाई उसको भी यू नो अभी हमारे पास अब रख लेंगे भाई, यू नो चलो भाई इज गोइंग आई थिंक बाय म्यूनिख, बट वही उससे थोड़ा सा मैं वापस आऊंगा भैया उसी चीज पे कि समवन लाइक Maguire, you let him dominate the situation। अब भाई तुम्हें उस बंदे के 30 मिलियन मिल रहे हैं, ठीक है, एंड ही इज बेसिकली सेइंग कि भाई मुझे 12 मिलियन दो तब मैं क्लब छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। फिर लोग बोलते हैं कि भाई अगर तू होता तो तू छोड़ देता। मैंने बोला भाई कि मैं छोड़ता नहीं, बट एटलीस्ट आई विल ट्राई, यू नो, ये वे फॉरवर्ड निकले जहां पे भाई मेरे मेंटल पीस का भी थोड़ा सा मैं ध्यान रखूं। ठीक है, फिर इसकी फैमिली आके सोशल मीडिया पे होती है यार। ठीक है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यू नो Maguire गेटिंग डेथ थ्रेट्स और अब्यूजेस और हम तेरे घर में आ जाएंगे, ये दिस शुड नॉट हैपन टू एनीबॉडी, Maguire हो कोई भी हो, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट द हेट्रेड, यू नो, व्हेन इट कम्स टू Maguire, जस्ट इमेजिन अगर यही चीजें, ठीक है, यही चीजें अगर कोई पॉग्बा कर रहा होता, देन जस्ट इमेजिन द स्टांस ऑफ द ब्रिटिश मीडिया। ठीक है, ये दूसरे को जो ज्ञान डालते हैं ना, दूसरे को कि भाई तुम ऐसे करो, अरे बहुत सही करो, तुम सही से करो। ठीक है, तुमने बना रखा है भाई, एक के लिए अलग स्टैंडर्ड, एक के लिए अलग स्टैंडर्ड, तुम पहले सुधर जाओ, दूसरों को ज्ञान मत दो, दुनिया को पता है कि भाई क्या करना है। ठीक है, आई विल नेवर सपोर्ट एनीबॉडी हु इज गोइंग टू गो आउट एंड से कि भाई Maguire should be abused, Maguire should have left, yes he should have left, Maguire you know he's on the bench, he's not even at this point of time। मुझे तो लगता है भाई जॉनी बांस को खिला देगा एरिक टेन हाग उसके ऊपर, यू नो, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। कैसेमीरो पता चले सीबी खेल रहा है, मैकटोमिने मिडफील्ड खेल रहा है और फिर भी Maguire पीछे बैठा है। मैकटोमिने अपने स्कॉटलैंड के लिए खेलता ही है, मतलब एंड टू एंड, कभी सेंटर बैक, कभी I would play Fish or Bennett. We have Exactly. center backs who went there pre-season. We don't need Exactly. Evans or Maguire. मोक भाई बोल रहे हैं, मोक भाई बिग अप यार, वन एबीसी बोल रहे हैं, Maguire has no right to cry for the criticism he's getting, though I'll never support the abuse he's getting, but Maguire and Southgate are the reason for it। मतलब हम लोग इतना जब सांत्वना दे रहे हैं ना, these are guys who are earning millions of bucks and we forget that lot of times। No, I'm not feeling sorry for them. Just because they are earning, you know, as I said, just because they are earning, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उनके साथ सिंपैथी हो। ठीक है, at the same point of time अगर तुम्हें सिंपैथी नहीं रखनी, abuse is not the way to go, as even Mohawk said, you know, no sympathy but abuse no one should, you know, कोई ये जाके ना बोले कि अरे भाई जाओ उसको 100 गालियां दे के, you know, उसके डीएम में घुस जाओ, उसकी फैमिली की मां बहन कर दो। This should not be promoted, but anybody who is giving me lecture कि भाई you know you should stand by the player, अरे भाई मैं क्यों stand करूं प्लेयर के, क्यों stand करूं? Just because he plays for United doesn't mean that he is United level, सिंपल सी बात है। You know, अब कल को उठा के ले आओगे भाई, you know, जॉनस्टन को और बोलोगे कि भाई he is United level, support the player, मैं थोड़ी सपोर्ट करूंगा यार, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मो भाई फ्री हो तो बोलो यार, मतलब डेफिनेटली। और भाई गाइस, आई हैव अनदर पॉडकास्ट इन वन आवर, आई वुड लव टू गो ऑन अबाउट यूनाइटेड। भाई हम, मुझे याद आया वीकेंड का ओवर है, डेफिनेटली यूनाइटेड इज द टॉपिक और हम डेफिनेटली बात करना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन अदर थिंग्स इज वेल। ऑफ कोर्स चिराग इज हियर। भाई चिराग, वेलकम टू द पैनल यार। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था, थोड़ा न्यूट्रल ओपिनियन देते हैं, मैं तो बहुत दिया हूँ यूनाइटेड के बारे में। चिराग, आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू and we'll come to the match as well, कहीं ना कहीं ब्राइटन के साथ। I think the timing of this is also not right। Manchester United versus Brighton is actually a potential 6-pointer। आप देखो तो top 5 position के लिए the way Brighton are going। चिराग, तो what is your opinion? First of all, even you're clear कि भाई definitely Sancho की गलती है and Ten Hag is basically doing the right thing, or you feel it's not as crystal clear? If I personally talk about Sancho now, if I was in Sancho's boot, I don't think उसकी कितनी गलती थी,
मतलब गलत है वो, इफ यू कंसिडर द प्रोफेशनल सेटअप उसकी गलती है। हाँ सीरियसली भैया, नॉट जस्ट कोलविल, ओवर फिकायो टोमोरी ही इज प्लेइंग, ही इज बीइंग गेगी को तो I have come on यही reason है, Ankit's channel and यही said this. reason है I have that come he's on more than Ankit's channel happy. and said this for the England squad. I've said this to Yeah. Ankit on his channel. That's the reason he's more than happy to just sit on the bench. उसको पता है उसका इंग्लैंड में स्क्वाड में जो है ना प्लेस इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, वो कुछ भी करे he is not gonna get benched. So he's more than happy. उसको मिल रहे हैं हफ्ते के 200,000 मिल रहे हैं, is more than chilling. UCL के पैसे से I think उसका पहुंच गया अगेंस्ट 250,000, ठीक है, आफ्टर UCL. तो भाई वही वाली बात है, वही वाली बात कि मतलब भाई मेंटल हेल्थ, अरे भाई मेंटल हेल्थ है तो उसको भी तो देखे, मतलब दुनिया उसको कुछ ना बोले, वो भले ही आके इंटरव्यूज में कुछ भी बोल के चले जाए. Just imagine a guy who has been who has been relegated more times than winning a trophy comes out and say I don't have to prove to anybody. मतलब ये तो यहाँ पे बैठ के मैं बोलूं कि यार मेरा चैनल मिस्टर 20 से ऊपर है, मेरे को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. क्या हुआ, भले ही मेरे 6,000 सब्सक्राइबर हैं और उसके 100 मिलियन, ये तो वही फालतू वाली बात है. कि मुझे किसी मतलब आई हैव रेटेड माय सेल्फ टू बी द बेस्ट, ठीक है, भले ही मैं ओन गोल ज्यादा मारूं गोल से, भले ही मेरे से टैकल ना हो, भले ही मेरी रिकवरी पेस ना है, भले ही मेरे से एरियल डुएल भी ना जीते जाए, ठीक है, बट आई एम द बेस्ट. अब जिसको जो बोलना है बोलो, आई एम द बेस्ट. चिराग, जस्ट टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, नहीं बिल्कुल, मतलब तो थोड़ा मैच पर आ जाते हैं गाइस, विल स्टिक टू द मैच अभी फॉर द टाइम बीइंग. चिराग, ब्राइटन ब्रो, मतलब अभी यार बाय द वे, यस आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोल ऑफ द मंथ मिला है मिटोमा को. भाई हम चेल्सी फैंस तो भाई आई नो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बुरा हाल है, हमारा भी, हम आएंगे उस फार्म पर भी, लेकिन भाई स्टर्लिंग का वो गोल जो हजार्डस था उसको नहीं मिला भाई, मतलब क्या ही बोलूं. लेकिन बट मिटोमा डिजर्व्ड इट, मेरे हिसाब से, मतलब मिटोमा आल्सो, हां मिटोमा डिजर्व्ड इट. बहुत अच्छा गोल था, आई एम नॉट गोइंग टू से इज बैड. लेकिन ब्राइटन, मतलब क्या हैव ब्राइटन पंच्ड अप द वेट अभी, और कंसीडरिंग अभी एक यूसीएल और यूरोपा लीग वीक है, रिमेंबर गाइस, तो अभी फोकस आ जाएगा ऑन द मैच फॉर टेन हाग. आई नो ही वुड लाइक टू अवॉइड ऑल द थिंग्स जो ऑफ पिच चल रहा है, लेकिन क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन, व्हाट आर यू कॉलिंग चिराग, मतलब कैसे जाएगा ये मैच? I really think this could be a good game for both the teams coming off the international break. Both of them need a good challenge to keep up the pace. I'll say Brighton has been putting up good performance back to back, and for United to stake that कि yes we are the big club and we are amongst the big six, वो उनको दिखा सकते हैं in this game, but it is not going to be an easy game against Disabri. A game of two good managers, I'll say rather. I want to see how Ten Hag and Disabri go against each other. That is where I am getting more excited. Nathan, what's your 11 bro for Manchester United? I think अभी तो टीम अपने आप पिक कर रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तो भाई एंटनी बाहर है, सैंचो बाहर है. नहीं नेथन, so what is your team quickly 1 to 11? Onana, Wan-Bissaka, Dalot, Martinez, Lindelof, Casemiro, Bruno, Amrabat, Rashford, Pelestri and Højlund. Let's go, baby. Come on. Let's go. तो मतलब The great Dane up in front. Yeah, it's quite, मतलब थोड़ा मतलब definitely taking a chance वाला लाइनअप है, लेकिन ब्राइटन के साथ it's not taking a chance. What do we have to lose? Look at our momentum. Brighton do concede. I think you're saying it right, because I think it's better to kind of play an attacking lineup against Brighton, because वो ऐसे भी goals करना ही है, तो कहीं ना कहीं let it be a 4-3. और I think you guys played well in the cup last season. You can argue that एक tactical game था, but you can also argue that Brighton should have gotten out more. लेकिन कहीं ना कहीं Ten Hag got the right tactics in that game. Got some Vegas magic that day, no? Oh yeah, absolutely bro. Anshuman, agree कहीं ना कहीं lineup के साथ, the one that Nathan said, or the one that you see? I don't think Amrabat is ready to start. I would love to see him start, but I don't think he's ready to start. Apparently, Anshuman, apparently, I don't know where I read this now, I don't remember, but Ten Hag said he's keen to get on Højlund and Amrabat quickly into the team. I don't know, I think it was related to something about the squad, and he said that. So I don't think he is, 100% ready to just start all of a sudden in the Premier League. He has been training. I think he might just come for 30 minutes, to take the burden over Eriksen, because अगर कल Eriksen, I think, who will be starting 60 minutes के बाद उसका ban जो है थोड़ा बच जाएगा against the Brighton midfield.
So I think for the last 30 minutes, I will put someone like Ahmedabad or 25 minutes, जो भी है. मोहक भाई का क्वेश्चन क्या है? Bruno at right wing. Go with Bruno. मैं वही बोलने वाला था. Tomorrow I will go with Bruno on the right hand side, or even Pelestri. So kind of to control Estupinian is what you would assume, right? Exactly. Because जो work rate हमें Bruno देगा tomorrow, बस कल का गेम निकाल लेना है for Bayern Munich, and after that, we will have Mason Mount on the right hand side as well. उसका भी option हमारे पास available होगा. He can easily play on the right hand side. He has shown it before as well. So Bruno on the right for tomorrow, I won't mind at all. ठीक है? But then for that to happen, you will have to go. You will have to be absolutely 100% sure about what midfield you are going to have. ठीक है? Or whether you are going to take a risk with someone like Garnacho on the right hand side, because I think Garnacho can give you like 45-50 minutes. ठीक है? And then you can replace him either with Bruno. ठीक है? अगर वो नहीं काम कर रहा तो, or even someone like Pelestri as well for the last 30 minutes. So थोड़ा सा उस तरीके से टैक्टिकली जाना पड़ेगा, because Bruno को बहुत तगड़ा डिफेंसिव एफर्ट जो है वो कल डालना पड़ेगा. ठीक है? I still believe that दोनों का डिफेंस जो है वो थोड़ा सा झंडू है in a way that they both concede. ठीक है? तो it's going to be who is more clinical on their day. ठीक है? It's going to be like अगर Ferguson is starting, he was training, so I think he will start. And बोल दिया, मतलब डिजर्बी ने बोल दिया कि Ferguson is good to start. Yeah, so and our Haaland is ready to start as well. So वही वाली बात है. At this point of time, I was very worried about just one guy, Lisandro. ठीक है? Because to deal with Ivan Ferguson, मतलब उसको एक वैसा बंदा चाहिए, someone like even with that shorter height, मतलब he will keep on niggling someone like Ivan Ferguson. ठीक है? वो मतलब करता रहेगा, उसको उंगल करता रहेगा throughout the game. ठीक है? और उसको पता है Ferguson की physicality. ठीक है? Obviously he cannot win against Ferguson in the end. तो उसको वैसा ही करना पड़ेगा कि he will just play like a step back. ठीक है? उसके पास अगर बॉल आ भी रहा है, he will keep on niggling. ठीक है? तो मेरे हिसाब से मेरा जो लाइनअप है, बैक फाइव I will definitely go with what Nathan had gone with. जो 5 है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, to be very honest. रेगुलियन मुझे नहीं लगता हम खिलाएंगे अगेंस्ट समवन लाइक ब्राइटन, क्योंकि डिफेंसिवली वो बिल्कुल ही वो तो डलो से भी गया वो डिफेंसिवली. ठीक है? तो मेरे हिसाब से बैक फाइव वही रहेगा. गोलकीपर ओनाना, देन वी हैव डलो, देन वी हैव मार्टिनेज, लिंडेलॉफ, एंड देन वी हैव बैन बिसाका. 5 ये हो गए. इन द मिडफील्ड आई विल गो विद कैसेमीरो एंड एरिक्सन. अगर अमराबाद फिट है, if he can give you 60 minutes, I will start Amrabat straight away. अगर मैनेजर को लगता है he can give you 60 minutes, I will start Amrabat. मैं बाकी के आखिरी के 30 minutes के लिए I will bring on Eriksen. ठीक है? Because we have seen Amrabat, I have seen, मुझे बाकी का नहीं पता, I have seen Amrabat play week in week out 90 minutes. ठीक है? वो बंदा barely gets replaced. ठीक है? barely किसी गेम में ऐसा होगा जहां पे he has not given Fiorentina 90 minutes. वो खेलता है और वो अपने पेस और अपने इंटेंसिटी पे 90 मिनट खेलता है. ठीक है? एंड हिज लॉन्ग बॉल, he is the top midfielder when it comes to giving the long balls, and trying to give the long ball. तो वैसे ही हमारे प्लेयर्स को चाहिए, with the likes of Rashford and with the likes of even Haaland coming in. So अगर वो 60 मिनट भी दे सकता है तो यार उसको स्टार्ट कर दो, नो ब्रेनर वो. ठीक है? तो मिडफील्ड में ये दोनों बंदे जाऊंगा मैं. As I said, I will go with Garnacho over Pelestri on the right hand side, क्योंकि Garnacho अर्जेंटीना के लिए on the right hand side खेला है. ठीक है? It's not like उसके लिए पोजीशन बिल्कुल नहीं है. So he has played for Argentina on the right hand side, so I have no problem. अगर वो वहाँ पे अगर 45 minutes, ठीक है, 45 minutes अगर नहीं, अगर 45 minutes के बाद अगर लगता है कि भाई उसको रिप्लेस करना है, then we have Pelestri as well. ठीक है? Pelestri हमारे पास ऑलरेडी है, उसको फिर डाल दो. ठीक है? उसको डाल दो, because I think neither Garnacho nor Pelestri, दोनों भी अभी 90 मिनट वाले प्लेयर नहीं है. And that's why we need someone like Mason Mount coming back as soon as possible, and he will be there. He will be there. Such scenarios, I think he's a good squad member to have. But I think guys, सब लोग chat पे बोलिए. और yes, by the way, members and people who are not members can definitely look at the membership scheme, because members के लिए है. Contest is definitely on the prediction league. Prediction league का message will come on the community page tomorrow, members. तो याद रखिएगा. बाकी लोग भाई, give your predictions in the chat. It's Manchester United versus Brighton. Again, मुझे लगता है there might be more mistake than what we imagine. It's after international break plus एक European week भी है, तो I can see
one or two minor kind of say precautions being taken, तो maybe एकदम full strength for 90 minutes नहीं रहेंगे, तो I can see some थोड़ा बहुत और mistakes. So I'm saying it might be a 2-2 draw. It's at Old Trafford and I can see it being a 2-2 draw. आप लोग भी बोलिएगा भाई, सब लोग भाई 100 लोग हमें देख रहे हैं और हम हैं लाइव 40 मिनट से, इतना तो बनता है गाइस, कम ऑन हिट दैट लाइक बटन. बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था. यस, कहीं ना कहीं पहले 40-45 मिनट हमने यूनाइटेड की बात की है बिकॉज दे आर डेफिनेटली वर्थ डिस्कशन, लेकिन वी आर मूविंग ऑन टू द अदर गेम्स एज वेल एंड लॉट ऑफ इट. टॉक अबाउट अदर गेम्स. चिराग, कल हमने डिटेल में डिस्कस तो किया ही था चेल्सी में, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बिकॉज यूर हियर आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन एंड एवरीवन इन द चैट. आपका ओपिनियन भी, अरे भाई मैंने सुन के दोस्त क्या हाल है भाई, एफपीएल के बारे में डिस्कस करना है फॉर श्योर. लेकिन चिराग भाई 2-3 एपिसोड है उनका भी यार, यूनाइटेड का तो भाई अलग ही लेवल है, लेकिन हमारा तो भाई हमेशा चलते रहता है, कुछ कांड चलते रहता है. अपना चालोबा सिचुएशन, ऑल्दो पॉच तो बोल दिया चेल्सी इज मी, आई एम चेल्सी बोल दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो भाई ही इज इन माय प्लान्स बोला है. आई नो ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्लेयर एंड द अभी तो इंजर्ड ही है, देयर इज नथिंग टू थिंक मच अबाउट दैट. अभी तो बाहर है भाई. अच्छा, बिफोर वी गो भाई, अंशुमन हैज टू लीव, तो भाई बिग अप टू अंशुमन भाई. सब लोग मुझे टाइम नहीं मिला बोलने का, मैंने सब पैनल के जो चैनल है सब tagged in the first line of description, क्योंकि सब फिट नहीं आ रहे थे टाइटल में, तो come on, give everyone a subscribe, just take सब button, और भाई सब लोग बेल आइकन भी दबा देना to United Road as well as the other channels, Sports and Dithan and Football Medico. भाई अंशुमन मिलते हैं जल्दी, hopefully you are much better space come the next time, लेकिन I hear you absolutely brother, कोई नहीं, मिलते हैं जल्दी. Thank you. चलो big up. Yes चिराग, please continue. हाँ जी, मतलब आई डोंट थिंक कि चलो ऑफ द फील्ड इतनी प्रॉब्लम्स है, हमें ऑन द फील्ड प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं हो रही है हमारी. ऑफ द फील्ड तो बाद में ही डील कर लेंगे. ऑन द फील्ड आई थिंक वी नीड समथिंग टुमारो. अगर बेन चिलवेल लेफ्ट विंग खेल रहा है तो देयर इज अ बिग इशू. या तो आप लेफ्ट विंगर साइन करते फिर स्ट्राइक पे निकल रहे चेल्सी फैंस, तो अगर वो लेफ्ट विंग खेल रहा है तो सीरियसली मतलब क्यों तुम एक अच्छे खासे लेफ्ट बैक को क्यों तुम उसकी जिंदगी उसकी भी खराब कर रहे हो, अपना सेटअप भी खराब कर रहे हो. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. आई रियली डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं ये, बट स्टिल आई विल बैक the team against Bournemouth. I feel we are good enough to win this game because हमारे काफी players बोर्नमouth हमारी बोगी टीम हुआ करती थी, वो अलग बात है कि लैम्पार्ड के अंडर वी वन सरप्राइजिंगली. हाँ I remember. Say seriously, मोग भैया कह रहे हैं चेल्सी यूनाइटेड भाई दिस सीजन. एग्जैक्टली सेम. मैं उससे शुरू किया था कहीं ना दोनों, मतलब आप सर्वे भी देखो तो 2 ऑफ द मोस्ट हेटेड नंबर्स है वर्ल्ड वाइड, प्लस हमारा मतलब थोड़ा सा होता है बवाल मच जाता है, मतलब दैट इज आवर प्लेयर पावर इज अ थिंग. आई थिंक यू इज एब्सोल्युटली राइट. बट प्लेयर पावर की बात करते हुए यार, मतलब जो मुड्री का सिचुएशन है भी हमें बात करना है. आई नो रीस जेम्स टू रियल मैड्रिड, तो भाई रियल मैड्रिड फैन सॉरी यार नहीं आ रहा वो 40 मिलियन भूल जाओ, और वो भी जस्ट बिकॉज मालो गुस्तो का बड़ा ही किया ना इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान. पॉजिटिव लोग बोल रहे हैं कि रीस जेम्स इज अवेलेबल. भाई अपना क्लब कैप्टन हम भूल रहे हैं क्या? एंड 40 मिलियन पीनट्स भी नहीं मिलेंगे तुम्हें इसमें, रियली. That's how it is. मैं एक चीज दिखाता हूँ देते ना, even you might want to pitch in here. I know Chelsea का in terms of where we are 12th, nowhere to be proud of, same as United, जैसे मोक भाई बोल रहे थे चैट में. लेकिन भाई एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, it is मतलब कहीं ना कहीं सब stats गलत नहीं होते. If you actually see the stat, it tells me that Chelsea are actually playing good football. Nathan, what do you think is missing? Well, as a neutral, I have to hear from you as well. What do you think is missing in the first 4 weeks that you have seen, apart from the finishing, which has been 2-3 साल से problem है यार Chelsea की. लेकिन what do you think has been missing in Chelsea these 4 weeks? Yeah, I think if you play people out of position, Ankit bhai, you're already putting it at a deficit. It doesn't really matter. And I don't think the injuries are the sole reason. I think Poch has also got to take the blame to some extent. No, right? but I was telling someone this. I think Swap here, right? It's Spurs fan. He can attest to it. This is how we fell out with Spurs in the end. A refusal to make subs on time, especially in losing positions, playing people out of position, making them more uncomfortable, and eventually becoming a liability towards the team. He has a level of stubbornness about him, which is very evident by the left wing Chilwell. Although everybody in the FPL would be happy about him playing left wing, I don't know if everyone's happy about it in real life. But he should score also. No, what's about? He has made some good runs. Like runs का घंटा का हम लोग क्या अचार डालेंगे? मतलब that's the whole point, right? No, but I think you got to blame Poch, which is it's so funny. It's kind of relevant to our scenario as well, because tomorrow we play Chelsea, right? All the English pundits wanted Poch to manage United. So as soon as Chelsea beats us, they would say
I told you so. But the funny thing is, because y'all aren't performing better than us right now, no, you don't hear the pundits say anything about that when it comes to Ten Hag. Maybe. Because before we signed Ten Hag, it was Poch has It's also nothing the to do. expectations, Just right, sign him Nathan? up. Abhi, Sign him up. after how badly we did last season, our expectations by default are little, I'm not saying low, but a little lower. We are a little bit careful. Maybe that's the reason. And again, Manchester United also, always you expect, and plus you guys won a cup, right? So you expect some progress from there. But quickly, if I'll take everyone's predictions, guys, Bournemouth versus Chelsea. Chirag, what's your prediction? Or starting round भी बोल दे Chirag, क्या starting round तेरी? I'm going with 2-0 to Chelsea. It's I don't think 2-1. गोल ना खाना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है. हाँ. It's 2-1. 2-1 I'm So going with. Dominic Solanke scoring against us क्या? Tyler Adams बेचारा injured. Obviously. यही होगा मतलब क्योंकि मतलब लाइनअप वी हैव ओनली वन कीपर जो खेलने लायक है हमारे स्क्वाड में अभी. सो वील गो विद रॉबर्ट सैंचेज इन द बैक. अभी के लिए, yes. गुस्तो स्टार्ट्स. देन आई विल गो विद थियागो सिल्वा एंड कोलविल तो फ्रेश ही है, खिलाया तो था नहीं उसको साउथगेट ने. सो इफ थियागो सिल्वा कैन प्ले, नहीं तो we can fit in any other centre back easily. Left back I am going with Chilwell. That is my personal lineup. मैं कोलविल को लेफ्ट बैक नहीं देखना चाहता, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी वरना. I am not so sure about Caicedo and Enzo playing because I think they are not completely ready. आज Pochettino ने आज भी यही बोला बोला है ना. Caicedo came back later. Enzo is ready. He's declared it in the press conference. Okay, Poch. so Enzo will play. Enzo तो definitely start कर रहा है, लेकिन Caicedo का डाउट है, देखा जाएगा. So it's So Gallagher, might be Enzo, Yeah. Gallagher, Enzo, Palmer in the middle, then Sterling on the right. Maybe on the left we will go with Mudrik. दे दो चांस यार, कुछ भी करके दे दो प्लीज बंदे को. And Nicholas Jackson up top. That is my lineup. That is what I believe. Yeah. बिल्कुल. अगेन मैं FPL के बारे में भी आएंगे. विल कम टू FPL इफ टाइम परमिट्स फॉर श्योर. मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं फॉर श्योर. यस, लाविया इज नॉट फिट. ब्रोया एंड बाडेशिल भी अभी मैच रेडी नहीं है. हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे हैं. रीस जेम्स इज द सेम. रीस जेम्स का मैं सोच रहा था भाई मैक्सिमम 1-2 हफ्ता और होगा, लेकिन सुनने में आ रहा है दैट द वे पॉच सेड ही माइट बी बैक बिफोर द नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक. तो भाई दैट इज द नेगेटिव न्यूज इन माय ओपिनियन. लेकिन बिल्कुल भाई अगेन लिवरपूल भाई. Guys, Liverpool के बारे में भाई, I know Nathan you would love to speak about Liverpool, but I have to speak भाई. Trent is out. By the way. Trent is having a hamstring injury from what I hear. आज के press conference में बोला है क्लॉप ने. And Virgil van Dijk for obvious reasons is also not there, if I'm not wrong. The suspension is also there for another game. लेकिन the fact is they're playing Wolves. Again, Wolves are definitely a miss when it comes to front of goal. Pedro Neto is one that I really like. But what do you see? मतलब Liverpool slowly but surely they are almost. Are 4 game weeks enough, Nathan, to tell that? I know for Nathan being a Manchester fan, unfortunately, but they are looking like that mentality that they were bringing, say the couple of years before last year. They are looking a lot better. Cannot deny that. However, the injuries are in what I would consider the most important part for them. Yeah. Even Darwin Núñez is not looks 100% sure, but yeah, but it's most okay. He misses goals all the time, so that's all right. He got the no. I'm that's not banter. I'm being like serious. Yeah. He misses a lot of chances anyway, so it's not like, I'm not saying he's bad or anything. I'm just saying that's not a worry. The defense is a real worry because Wolves have proven to be very problematic for Liverpool. I think they are looking better though. That Endo, oh my god, it was a good game against Germany. I was like, I'm so happy every time Germany loses though, because Musiala, the traitor, every game Musiala loses though. I'm like, yes. Even McAllister, he had a brilliant proper battle tha. McAllister versus Caicedo in that match, if I remember, in the international break. Lekin for me, again, Liverpool fans, I would love for you guys to also tell in the chat. लेकिन मुझे लगता है that कहीं ना कहीं McAllister, because internationally also if he's playing that role, it suggests to me that they might be open to that role for him, or Endo might be the cover and may not. Endo अपना मेंदू बड़ा यार, प्यार से हम बुलाते हैं भाई. He's a good player, but he kind of restricts the way Klopp wants to play, especially against teams like Wolves. और horses for course हो सकता है, right चिरा? क्योंकि आपको Wolves के साथ भी एंडो को खिलाने की जरूरत नहीं है, if I'm being really honest, नहीं. But I think as Nathan mentioned that he is in good form the way he played against Germany. So I believe he must be. Klopp might try to put him in. बिल्कुल.
चलो यार Klopp प्लीज. might try him in. मेरे हिसाब से, I think अच्छा. this is the best time for Klopp to test his best 11. नहीं लेकिन And यूरोपा लीग में करेगा ना, यूरोपा लीग गेम है I know, I कमिंग अप. think so. I think so. Endo will play the Premier League. I believe so. अच्छा, चलो ये कोई नहीं Klopp ऐसा गाइस पर्सन जो अगेन. ज्यादा Klopp changes नहीं करता. Maybe वो नहीं चाहता. He knows his best 11. He will trust that. Also, Ankit and Chirag, some managers like to play players that play football and are in form. So I have a feeling that Klopp knows what he's doing, unlike some managers. अरे ओके ओके ओके. बट क्लॉप डेफिनेटली यार, वी रेट हिम बिग अप. आई At least थिंक कहीं ना nobody's parents are going to कहीं complain at the end of the game. Let's just put it that way. आई पुट अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन. उस दिन क्या है ना, सब पीपल आर सेइंग भाई यू आर अ लिवरपूल हेटर. भाई सीरियसली अपना गोट लेवल चेक करो. मैंने क्लॉप को डाला है अबव पेप एंड जोसे मोरिन्यो ब्रो. आई एम नॉट इवन जोकिंग. एंड यू नो हाउ मच आई लव जोसे मोरिन्यो, जस्ट सेइंग. लेकिन गाइस अगेन मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हो रहे हैं. अगर आप लोग क्या चीज पसंद नहीं आ रही है बिंदास बोलिए कमेंट्स में, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग लिटरली एवरी मैच एज मच एज पॉसिबल. ऑफ कोर्स वी ऑलवेज बिलीव दैट इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑटोसी फॉर अ रीजन. भाई हम करीबन 1 घंटे से लाइव है और करीबन 100 ऑन एवरेज देख ही रहे. तो भाई वी शुड हैव मिनिमम, वी नॉट आस्किंग मच, 150 लाइक्स तो बनने ही चाहिए स्ट्रीम में भाई. कम ऑन, जस्ट प्रेस बटन. और अगेन मैं शॉर्ट आउट दे रहा हूँ अपने के चैनल्स को. प्लीज चेक आउट फर्स्ट लाइन डिस्क्रिप्शन, टेक्स अ बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन. बैक देम विद वाचिंग एंड गिविंग देम फीडबैक एज वेल. ठीक है, तो भाई सब लोग वुल्स के साथ लिवरपूल, एवरीवन अस्यूमिंग गोइंग विद द प्रेडिक्शन ऑफ लिवरपूल विन. आई नो वुल्स कहीं ना कहीं वो बदला वाला भावना पता नहीं याद है कि नहीं सब लोग को. Wolves in cup games have been unlucky to some extent. Certain red clubs know that. Sometimes the camera wasn't there, this wasn't there, and I know we all remember that Bruno Fernandes और उसका हुआ था ना, क्या अपना नाम है जो सऊदी चल गया बंदा, उसके बीच में लड़ाई हुई थी लास्ट सीजन. So there is always have some history behind that. लेकिन I think let's be real, Liverpool are the form team और Wolves are somewhere down the line missing that goals for me. Let me see the predictions in the chat, guys. यहाँ पर I actually am going to go for a 1-1 draw. oh wow, that's no surprise. I'm shocked. Nathan, come on. No. I really think Wolves is a problematic team for Liverpool. That's why. It's an Also, away my game Chelsea- technically, so I hear Also, you. the Chelsea Bournemouth game, I think Chelsea is going to win 2-0. Action Jackson double goal. Come on, give me some चलो, points. we need that big Give me time. some यार. points. Back to And I back. believe, like Nathan saying, कल early kickoff भी है थोड़ा. Saturday early kickoff Well, might yeah, be. 1 minute motivation. I believe he's a Liverpool fan. Even he's saying we have a very bad record against early kickoffs. So. Yeah, exactly. कल early kickoff है तो might be, but I think Liverpool is winning it. I think. I don't think Wolves will win, but I think they might edge a draw. You know what? Before we go to the Milan Derby, there's one match which is going to be interesting. I feel कहीं ना कहीं they have not punched above the weight. West Ham were underperforming for a good while in the Premier League. मुझे genuinely लगता है, yes, कहीं ना कहीं उनका जो tactic होता है that they kind of give the possession to the opposition and they hit on the break one ball to अपना बंदा Antonio and that's it. But even Bowen, मतलब for FPL gurus भाई, I'm telling you Bowen by Darren in the house. आप लोग बहुत बार बोलते हो Bowen is one guy that you always need to go with because he has that ability to score goals. Of course उनकी midfield तो भाई next level हो गई है against Man City. अब that is an away game. And yes, FPL managers, सुनने में आ रहा है that a lot of people are not going with Haaland as captain for once, or I can see why. But West Ham, याद रखिए last season भी ये हुआ था that Man City dominated when they went to West Ham, और फिर एक goalkeeper change हुआ, फिर सब चीज change हो गया. I remember that Fabianski got changed and that's it. लेकिन इस बार even the goalkeeping, I think hats off to the performance he had against Brighton. I must be saying Ariola. क्या बोलते हो चिराग? सरप्राइज कमिंग मैन सिटी भाई, ये जो मैचेस है थोड़ा बहुत सरप्राइज देख सकते हैं मैन सिटी के लिए. No, but with Man City, no, Man City never underperforms against a good team. If you are a good team, it's your cause. Man City नहीं छोड़ेगी तुम्हें. With the form West Ham is in, नहीं possible. नहीं, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक मैं दो रीजन बोलता हूँ. एक तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद है और एक है चैंपियंस लीग वीक कमिंग अप. यार स्क्वाड डेप्थ जितनी मैन सिटी के पास है दुनिया में उतनी किसी के पास नहीं है. क्वालिटी के साथ. If you don't have Haaland, they will go. मतलब Haaland खेलेगा, but if in case Haaland is not on the form, Julian Alvarez उनके पास ready है. They don't need Also, anything. I think they'll only play one of him, right? Because of the UCL rotation. Might be. Pep ball is about to begin. Half of the players aren't going to play half of the or they might play both and take off both at our mark. That's also quite possible. He's just going to play Rodri up front for the first game in the UCL.
Lovely. Imagine that. But Yeah, I think guys, I said that at Haaland's age, I don't think Haaland को मुझे रेस्ट देने की जरूरत होती है. He said this fair point. कि at that age he should be playing almost all games. So he said कि ज़्यादा problem नहीं है with Haaland. But he has ankle issue history, no? It will be like a Kane thing in the future if you overplay him. That's the only issue. And with Pep Guardiola, So you never. West Ham City. It's We at do. West Ham. Messi's good. तो भाई, what's your prediction, Nathan? Go for a prediction. West Ham versus City. I'm going to say, you know what? I did the watch along of Sheffield United and City, and Sheffield United did a fantastic job of keeping them quiet. Yeah. Then that fellow came off the bench and he screwed everything up, like Jarawi or something. I can't pronounce his name, Larawi or some Larusi or something. He literally screwed the whole game up because Sheffield were doing a fantastic job of keeping Haaland quiet. And I always believe if you keep Haaland quiet, you really improve your chances of getting something. On the other Especially when side, De Bruyne is not around. yeah, everyone's talking about Bowen, but on an FPL point of view, James Ward-Prowse has got a return in every game. So I think he's actually the danger man for Exactly. West Ham Midfield of West Ham, I think because a very his good movement, choice. his contribution doesn't involve movement. It's a free kick, it's a corner, so there's less. It's a more stable environment in which he can perform his best at instead of off the break mistakes, this, that, and the other. So I think Man City will win 2-1, but I think West Ham are really going to give them a good go. I really think so. You know what? And I agree with his comment. And Julian Alvarez, I know as much as Pep is Pep and City is City recently. The fact is, I will not be surprised if he moves on. Because He doesn't have to move far, Ankit. You get him a taxi, let him change neighborhoods. लंदन तक चल जाएगी टैक्सी. Sorry. I don't mind यार, सच में बोले तो अभी अपना जो चल रहा है ना, फिर लेकिन अपना Jackson, I बोया don't by the know. way हाँ is यार. coming and he'll say that भाई मैं भी हूँ, भूलना मत मुझे. लेकिन कोई नहीं, I know I'm comparing from apples and oranges यहाँ पर. Yeah. नहीं, I think Saka is okay is what I hear. Saka is okay. Again थोड़ा बहुत FPL की हम बात करेंगे. Again correct me if wrong. Arsenal का by the way कौन सा मैच है bro? Arsenal Everton है भाई, away है, लेकिन Everton have been one of the weakest teams यार. Let's be real. I know Sean Dyche hasn't been Sean Dyche, simply put. Menace in the Monk, I think Man City will struggle this season. A sad top 6 club fan. I wish that was right यार. I wish मतलब Man City fans गाली देंगे मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं फुटबॉल और EPL को बोरिंग बना दे यार. EPL was never boring and I hope it doesn't go that way. लेकिन credit where is due for sure. लेकिन Arsenal quickly यार क्या बोलो चिराग, Arsenal, the fact is now Arteta को इतना basically मिल रहा था प्रेशर, ये वो हावर्ड्स का पता ही है. lot of Arsenal fans DMing me a lot of times कि भाई इतना आपने प्रोटेक्ट किया लास्ट सीजन कि भाई हमने आर्सेनल ने हावर्ड्स को पिक कर लिया. लेकिन द रियलिटी बीइंग दैट अगर आप बोल रहे हो अपार्ट फ्रॉम मैन सिटी, अभी between Brighton, Arsenal, Newcastle, by the way they also have a decent match this weekend against Brentford. इतना इजी नहीं रहेगा दो, at home है. Which is the team? क्या लगता है सेकंड कौन सी टीम आएगी अभी as things stand? In the Premier League. हाँ. Too difficult to say, yaar. But I think right now I'll bank on Arsenal. But as I have said in my video, मैं Chelsea को out of conversation रख दूंगा. But I think United, Liverpool, and all these four teams, City and Arsenal, might give you a very, very good Premier League fight. This is not going to be a two-way fight this year. I think it could be a three-way fight minimum. Okay, that's an interesting one again. Horse's mouth. One can hope. Hope is what keeps us alive and keeps us Exactly. going. That is the only thing as fans of sports में तो बोलता हूँ भाई. अब देखते हो stories do happen and why not man, मतलब कहीं ना कहीं चाहिए. Evan Ferguson has been announced. I've already discussed about that स्वर्णदीप आप 1 घंटा just late join के मेरे भाई check out अपने पहले 40 मिनट मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन की बारे में बात की, तो भाई check it out for sure. लेकिन अभी हम अगर बाकी बात करें, ये क्या चूना लगाया भाई, रुकिए सबर का फल मीठा होता है भाई. मोम भाई खेलेगा अच्छा खेलेगा, आने दो. माउंट तो आई डोंट थिंक इट्स एन इशू एट ऑल. हावर्ड्स का फिर भी देयर आर नहीं तो अरे दोनों अच्छा खेलेंगे. आप लोग चैंपियंस लीग फाइनल जाओ, उसमें दोनों खेलेंगे. बस फाइनल पहले पहुंच जाओ. मुझे लगता है एड ऑन्स चाहिए चिराग, इसलिए बोल रहा है यार, जस्ट सेइंग. पहले फाइनल पे पहुंच जाओ बस. कोई नहीं, चलो भाई आई हैव टू कवर FPL एज वेल भाई. उससे पहले थोड़ा मिलान डर्बी के बारे में बात करना बनता है. I'll push off. चिराग हैज टू गो भाई. एवरीवन भाई चेक आउट फुटबॉल मेडिको. मिड विकेट को भी मैंने किया टैग. ऑफ कोर्स आज इंडिया भी खेल रही है गाइस. व्हाट इज द स्कोर वहां पर? मैं Go out 265 था टारगेट.
हाँ 266 का टारगेट है एंड 2 आउट हो चुके हैं. वी आर गुड, डूइंग गुड. अब थोड़ा स्टेबल चलो, कर दिया केएल राहुल ने. let's hope for the best. Yep. चलो guys, we'll meet Chirag very soon. Big up to Chirag भाई. First line description again भाई, 1 सेकंड लगता है. Let's subscribe to them and support them as well. दोनों channels चिराग और See you guys. श्रेयांश को भी shout out है यहाँ पर. मिलते हैं जल्दी यार चिराग. See you See you. soon. Up the Chelsea no matter what. लेकिन Nathan, the Milan Derby bro, you know that one match जो काफी debatable है. I know El Clasico तो भाई अलग level है. But after El Clasico, for me, this match really stands out. You can argue that the Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham also, but for me Milan Derby is that level. और इस बात तो दुश्मनी वाली बात है, because remember Champions League semi-final, it was quite recent. Coppa Italia. If you have to pick one team that has done better business over the summer, because now the transfer window is done, is it Inter? Because both have made quite a few signings. Inter Milan, yes, Onana Will you is tell me gone, some of the but they've got signings? experience. I have not kept in track. I've been too depressed looking at my own team's lack of नहीं तो efforts. बेसिकली ऑफ कोर्स मिलान तो भाई आधा चेल्सी वहां पर आफ्टर जीरो इन टोमोरी दे आल्सो गॉट इन रूबन They're लॉफ्टस-चीक, दे Loftus-Cheek. गॉट इन Pulisic, who's actually started very well, mind you. और वही नहीं, they are having Reinders, who's a good midfield man to have, to be very honest. Apart from that, भी I think general philosophy of football is more attacking. जो मिलान का criticism था under Pioli last season and even the season जब हम Scudetto जीते थे, that we are going a bit too defensive, which Inter is known for. But right now they are playing like free-flowing football. Ruben Loftus-Cheek has been very key. In fact, he's been very key as much as Pulisic is getting the news. Of course, Rafael Leao has to be that man जो एक बहुत ही अच्छा गोल मारा था just 2 weeks ago. Awesome bicycle kick almost. लेकिन Inter Milan on the other hand, I think the fact is about Inter Milan getting those experienced players. Like for example, they've got a Cuadrado from Juventus on the wing, and they play the 3-5-2 system. They've got and again an experienced goalkeeper in Sommer, right? तो वहां पर yes, Onana is gone, but they've got some experience. So they've actually replaced with good experience. David Fatesi, I know a lot of Inter fans are saying that from Sassuolo Jai, he should start. But right now, Scored a I double think for Italy, right? correct. In And international generally speaking, I think, let's be real, even last Champions League showed that Inter's midfield was never a problem. I think the problem was over dependency on Lautaro. Of course, Lukaku misfired last season, and this time they've got Thuram who opened the scoring. And they are also looking like the form team. So generally, a larger picture of things, I know Simeone Inzaghi looks like more like a cup manager, but the fact that you can't say that it's an Inter's house or whatever, because it's all San Siro right now still. So generally, on the outlook, what do you think? Again, chat, you must be putting your points as well, because Inter versus Milan right now, for after a long time after we won the Scudetto, मेरे लिए Milan are looking slightly better. Maybe I'm biased, I don't know. आप लोग बोलिए मुझे. But Inter are defensively very strong, of course. So what is your pick, everyone? Inter versus Milan, of course. Do not forget this. This is tomorrow night. And by the way, talking about that, even Bayern Munich versus Bayer Leverkusen is tonight, yeah, midnight. So that'll be interesting. But if you have to pick one right now, Nathan, between Inter and Milan, what is your pick? I'd unfortunately, as much as I have no interest in supporting any team Lukaku plays for, I'd have to edge it out to अब तो भाई रोमा में AC है Milan. Lukaku. So now it's the next No, honestly, team. growing up, I love to see AC Milan play, but I remember the days when Inter Milan had Christian Kivu, Javier Zanetti, Dejan Stankovic, Esteban Cambiaso, Gabriel Milito. So it's been a while, Ankit. It's been a while since I've watched Italian football the way I used चलो to. कोई नहीं, तो यार मैं ही बोल रहा हूँ I'll भाई. give it an edge. I've also noticed that they have not conceded yet in 4 matches, in 3 matches, which is actually quite impressive. They have scored the same amount of goals as AC Milan, but AC Milan have conceded 2 goals. I'll give them the edge, but it's a Milan derby. Let's be honest, it's a derby match. Anything can happen. Cool stuff. चलो guys, so again Milan Derby में डिटेल में बात नहीं करूंगा because I have to cover FPL as well. Nathan, thanks a lot for coming, bro. We have discussed so much. मैं FPL थोड़ा अकेले करूंगा. I'm just going to give tips and pointers to everyone quickly. But everyone, Sportsnet Nathan, Football Medico, यहाँ पर the United Road as well as Mid Wicket, all the 4 channels linked है description में. मैं अभी भी देख रहा हूँ
Guys, we are live for over 1 hour and on average 100 people are watching. It's unfair कहीं ना कहीं. Much love to everyone coming on. लेकिन आप लोग like button दबा रहे हो तो आप लोगों को बताना है क्यों नहीं दबा रहे हो, because we would love the feedback. It's a fan channel for all to see. We literally discussed all the teams and I know हम बोलते हैं all the teams, all the big teams, लेकिन Spurs को हमने नहीं discuss किया डिटेल में क्योंकि मैं FPL में Spurs की बातें करूंगा. And yes, this is something swap. I know that you're a Spurs fan. We'll be discussing that in FPL. लेकिन भाई Nathan, big up. We'll see you very soon, bro. Thanks for coming on as always. लेकिन I'll just cover a little bit of FPL and then move on, bro. Absolutely. Guys, take care and do hit those likes, guys. Come on the way, on the road to 11K. Let's go. And And Nathan, buy, I think he's also very close to 1K, right? I passed 1K actually. I passed 1K. Oh, I about didn't 10 know. days ago. Congratulations, yaar. Nathan OP ho Thank you jaye. so Let's much, up yeah. road to 2K kar do yaar right now. Let's do Yes, it thank 2K you so for much. Nathan quickly as possible. Oh Because yeah, that is by what the way, going that on. reminds me, Ankit, if you don't mind me saying it before I go, we're going to do a little bit of a celebration stream probably next week sometime. So please feel free to join. We most probably will not be talking about football. So it's just actually going to be a chill stream. So if you have an hour to spare, then please do join sometime in the night. It will not be on a Champions League day. It will be in between the games. Chalo, nice. Even I'll try and So join, bro. Absolutely. absolutely. Chalo, bhai. Thank you. All the Take best care, and of course guys. see you Good very night. soon. And good luck to all the Chelsea fans and We need it United and so fans do who are you. watching the game. I've had enough of this Arsenal, Liverpool, Man City thing. You know, it's time we uproar together. Even why not even Spurs? Come Bye on, bye. North London Derby. Let's go, Spurs. Absolutely. Good See you stuff, good guys. Take stuff. care. Chalo, see you Nathan, we'll see you very soon. Okay guys, quickly मैं यहाँ पर FPL का करने वाला हूँ while Nathan is gone right now, but last 15 minutes है because I have to go to भाई बाबा के stream में भी जा रहा है 8:30 बजे. भाई before that guys, let's hit that like button. भाई जो भी लोग like button दबाए, let's hit that like button. Come on. मैं काफी सारे स्टार किया तो comment मैं highlight करता as much as possible. Remember 4-man panel तो I have to hear them out, cannot disrespect them. That's the whole idea. लेकिन I try to highlight as much as possible. अगेन आप लोग को प्रायोरिटाइज करना, यू कैन ऑलवेज बिकम अ मेंबर. यस, मेंबर्स के लिए पिटिशन लीग भी है. दैट इज अ कॉन्टेस्ट, देयर इज अ प्राइज गाइस, जो हुआ था लास्ट टाइम. मानव ओपी इन द हाउस भाई, या ही आल्सो वन लास्ट टाइम, रिमेंबर दैट. लेकिन मैं क्विकली बोल रहा हूं भाई, क्विक टिप्स एंड पॉइंटर्स दे रहा हूं फॉर एफपीएल राइट नाउ भाई. अगेन आयुष एंड एवरीवन, रिपीटिंग इन वन लास्ट टाइम. The first line in the description, the first two lines in the description have the panels channels as well as our second channels link. So everyone give a subscribe to all those channels. I would request you. Plus, most importantly, hit that bell icon on their channel as well as ours. दोनों channel. ठीक है. Trent is injured, that I already covered. Liverpool वाले न्यूज में तो भाई इस वीक के लिए I would say bench Trent, do not substitute because इतना बुरा इंजरी नहीं है if you already have Trent in your squad. हाँ, generally अगर मैं आप मुझे पूछो should I use FPL chips right now, I would say hold on करिए अभी भी. Why? Because Champions League और Europa League week है, तो let's see what happens there and then use it the following week. So wait for the FPL chips yet, I would say. Konate is not ready yet for Liverpool, just saying out. नूनेज थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इन माय ओपिनियन नूनेज अगर बेंच पे भी रहता तो he'll have an impact और आप रिस्क ले सकते हैं नूनेज के साथ, तो गो फॉर इट. लेकिन अगर मैं जनरली बोलूं ना, मैं यहां पर क्विकली मैं बताया हूं एक डबल गेम वीक आने वाला है गेम वीक 7 में. तो गेम वीक 7 में लुटन और बर्नली का डबल गेम वीक है गाइस. सो हुएवर प्लेइंग एफपीएल, रिमेंबर दैट you can definitely bank on Luton and Burnley, at least एक प्लेयर दोनों से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा गेम आपको मिलेगा नेक्स्ट 4-5-6 हफ्तों में फॉर लुटन एंड बर्नली. यस, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. मैं एग्जैक्टली नाम भी बोल देता हूं, लुटन से मॉरिस करके है फॉरवर्ड, 5.5 मिलियन में है. गो फॉर हिम गाइस, आई वुड से दैट इज अ गुड ऑप्शन. इफ नॉट, बर्नली का अगर आपको लेना है तो फॉस्टर के साथ जा सकते हैं, वो खाली 5 मिलियन में है. तो इधर मॉरिस या फॉस्टर, FOSTR are the options in the forward from Luton या Burnley. अगर आपको चाहिए एक चीप फॉरवर्ड जिसका डबल गेम वीक है. रिमेंबर, डिफेंडर अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा डबल गेम वीक वाला, यस, डिफेंडर लुटन बर्नली का मैं रेकमेंड नहीं करूंगा सच में बोलूं, बिकॉज दे विल बी कंसीडरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स इन द अदर गेम्स. लेकिन एक एक्स्ट्रा गेम है तो भाई आप स्क्वाड में रख सकते हो, सस्ता भी है. 4.5 मिलियन में आ रहा है जाइल्स, आई थिंक फ्रॉम लुटन. ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, सो कंसिडर हिम. यहां पर एक लेफ्ट फील्ड में बोलूंगा एक और, बहुत लोग ट्रिपियर को ले रखे हैं अपने टीम में. ट्रिपियर, यस, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा भाई, जो टीम से आपको लेना है फॉर द नेक्स्ट 5-6 गेम वीक्स, आपको पता है मैं ऑलवेज knowing people who followed Almighty Sports last time and FPL, I always recommend भाई नेक्स्ट 4-5-6 हफ्तों को देखकर, ठीक है.
न्यूकासल इज अ टीम, मैंने बोला था पहले 4 हफ्तों में, डू नॉट पिक मेनी प्लेयर्स फ्रॉम न्यूकासल, क्योंकि आप देखे ही हो न्यूकासल का स्टार्ट बहुत डिफिकल्ट था, इट वाज अ डिफिकल्ट स्टार्ट. So take Newcastle players right now because the next 5 game weeks Newcastle का compared to any other team in the Premier League सबसे easy है. ठीक है, that is one very good pointer. Trust me, you will not get disappointed. Take Newcastle players जितना maximum हो in my opinion. ठीक है, ट्रिपियर ये जरूर बोलूंगा, लेकिन ट्रिपियर आधी दुनिया ली है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा लेफ्ट फील्ड जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रिपियर कंसिडरिंग वो एक फुल बैक स्लैश विंग बैक रोल खेलता है, he might get the odd rest in one of those games. क्यों? क्योंकि अभी चैंपियंस लीग 20 साल के बाद खेल रही न्यूकासल, एंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर न्यूकासल, वी ऑल नो दैट. तो बॉटमैन इज अ लेफ्ट फील्ड ऑप्शन, तो गो फॉर हिम. यस सेंटर बैक है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं चीपर है और वो गेम्स खेलेगा और इजियर गेम्स है. क्लीन शीट्स की एक्सपेक्टेशन है न्यूकासल से, डिस्पाइट नॉट स्टार्टिंग द प्रीमियर लीग वेल. अच्छा, और बाकी टीम्स जो इजियर है मैं बोलूंगा टॉटनम, they have been the team, or yes, they have been the team of the Premier League abhi, apart from City in my opinion. Of course, Ange Ball, आप जानते ही हो, he has got the manager of the month. यहाँ पर I think Madison को मिला player of the month for a reason. लेकिन मैं बोलता हूँ कैप्टन ऑफ दिस गेम वीक भाई ह्यूंग-मिंग सॉन. रिचार्लिसन बेचारा वापस से रोया इन द इंटरनेशनल ब्रेक. एज मच एज वी काइंड ऑफ टोल्ड हिम इन द पास्ट, बोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं वो ह्यूमन है, एंड he looks like वो शुरू नहीं करेगा. तो सॉन might actually start and they have an easy game week as well. आई थिंक आप डेफिनेटली सॉन को कैप्टन बनाओ. यस, मैं हालैंड को बोल रहा हूं नहीं कैप्टन बनाने के लिए एक हफ्ते के लिए. गो फॉर सॉन एंड इवन मैडिसन फॉर दैट मैटर. यस मैडिसन, लेकिन क्योंकि प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है, मैं देखता हूं सॉन माइट बी प्लेइंग अप फ्रंट एंड गेटिंग सम गोल्स. लेकिन टॉटनम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, इवन लूटन और बर्नली, ये 5 टीम्स को मैं रेकमेंड करता हूं. जनरली आप प्लेयर्स अगर ट्रांसफर इन कर रहे हो, take from Tottenham, Manchester United, Chelsea, Luton, Burnley, apart from Newcastle, which are the easiest fixtures in the next 5 to 6 game weeks. तो भाई ये 6 टीम याद रखना, न्यूकासल, टॉटनम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लूटन और बर्नली. यस, आप बोलोगे चेल्सी क्यों? आई वुड स्टिल से चेल्सी के डिफेंडर्स थोड़े से रिलायबल है, और हमने स्टार्टिंग 11 की बात कर लिया है इन यस्टरडे. बाय द वे, देयर इज अ ब्लू अलायंस शो ब्रो, गिव अस सम सपोर्ट देयर. लेकिन मैं चैट में भाई आई विल नॉट बी एबल टू टेक कमेंट्स स्पेसिफिकली ऑन एफपीएल पर्टिकुलर टीम्स. आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो. डेडलाइन कल है, तो भाई इट्स नॉट अ डेडलाइन स्ट्रीम रिमेंबर, बट वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग ऑन डीएम्स अगर आप करना चाहो तो. जैक्सन, और भाई पीपल हु डू नॉट कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, भाई हमारा लिंक ऑलवेज बॉटम ऑफ द डिस्क्रिप्शन रहता है हमेशा. आर सोशल मीडिया लिंक्स, every description, bottom of the link has our social media links, and top of the description has our second channel links or membership links भी. So for people who want to check out that, absolutely worth it in my opinion. जैक्सन को रखना है या नहीं, मेन क्वेश्चन ये तो है. आई थिंक रखना चाहिए. द फैक्ट इज जैक्सन इज नॉट टू एक्सपेंसिव. अभी गोल्स मार देगा, फिर आपको लगेगा भाई रखना चाहिए था, वापस लाते, फिर देखना. तो आई फील अभी भी मैंने दिखाया था कल के द ब्लू लाइन शो में, जैक्सन के नंबर्स आर अमंग द बेस्ट. इज जस्ट दैट ही नीड्स टू convert the chances. That's the only thing. Yes, कहीं ना कहीं वही है, डार्विन नूनेज वाला मामला है, but I think one or the other आप लीजिए, दोनों को मत रखिए. ये चीज मैं जरूर से बोलूंगा. Son is good. Udogi is definitely by must haves में Tottenham players are a must have. Tottenham, Newcastle I would say must have almost यार. Get in all your Tottenham and Newcastle players अभी के लिए. डिस्पाइट थोड़ा टॉटनम का फिर भी 2-3 हफ्ते थोड़ा मुश्किल रहेगा, नेक्स्ट 6 हफ्तों में जनरली फॉर्म लग रहा है, और इवन इफ इट्स अ टफ गेम दे आर अ टीम विच स्कोर्स मेनी गोल्स. सो आई थिंक गो फॉर इट. भाई उडोगी इज ब्रिलियंट ब्रो. दक्ष इन द हाउस ब्रो, क्या हाल है भाई? बाय द वे पीपल हु डिडंट चेक आउट हु एम आई यार, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस विद दक्ष, एंड ऑफ कोर्स मंत्रा हमारे भाई यार. बहुत मजा आया कल, आप लोग ने बाई चांस ने चेक किया, बट चेक आउट ए फॉर आर्सेनल एज वेल. लेकिन अगेन स्वर्णदीप, मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा बिकॉज 5 मिनट्स में आई एम जॉइनिंग बाबा यार. तो बाकी मैं पॉइंट्स में क्या बोलूं भाई, मैन सिटी आप हमेशा सोचते हो शुड वी नॉट, स्टार्टिंग में होगा कि नहीं. जनरली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते मैं एनीवे बोल दिया कि यार हालैंड फॉर अ चेंज आप नहीं रखो कैप्टन, तो बेटर है गो विद सॉन और मैडर्स. लेकिन मैन सिटी के अगर आप देखो, यस क्या ही तो टफ है यार मैन सिटी के फिक्चर्स आप बोलोगे, लेकिन मैन सिटी के कंपेयर टू अदर्स, मैन सिटी, ब्राइटन, क्रिस्टल पैलेस और वेस्ट हैम के ज्यादा प्लेयर्स मत लो. व्हाट आई वुड रेकमेंड, as much as West Ham, Brighton और Man City का बहुत बढ़िया रहा है, आप बोलोगे यार they are anyway going to win against the teams, need not be, because they are slightly difficult fixtures compared to the others. तो आप, मैं 6 टीम बोला था, उन टीम्स में डेफिनेटली आप यू कैन पिक न्यू ट्रांसफर्स की बारे में बात कर रहे हैं, यू कैन पिक प्लेयर्स फ्रॉम देयर. अगर आप बोल रहे हैं प्लेयर्स दैट इफ दे आर इंजर्ड और डाउटफुल, आप मैन सिटी, ब्राइटन,
क्रिस्टल पैलेस और वेस्ट हैम से नहीं प्ले करिए बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली टफर वंस. लेकिन मैन सिटी से फिर भी मैं बोलता हूँ एक दो प्लेयर्स तो रखिए, स्पेशली हालैंड इन द टीम बट नॉट कैप्टन, ओनली फॉर दिस गेम वीक. कांट ट्रस्ट टॉटनहम रिगार्डिंग द बॉटलिंग कल्चर. वेल, एंजी बॉल लुक्स लाइक कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ दैट ही इज गोइंग द वे ऑफ, आप लोग जानते होंगे दैट Martin Jol, before Harry Redknapp was the coach, he believes in that Dutch football kind of mentality as much as he's Australian. वो बहुत common है Australian football as well as Dutch football, total football of the past. तो कहीं ना कहीं he's going that way, so I can see them scoring goals. So I think I would still recommend midfielders as well as forward from the say Tottenham team, especially Son and Madison for sure are must-haves in my opinion. Rashford must-have मैं नहीं बोला क्योंकि Rashford अभी भी I don't think he's got to that gear where he expects. But yeah, I think that is about it. मेरे कुछ ही थे आज tips and pointers. I hope it helps. Remember the double game week for Luton, Burnley. Remember the must-have जो मैंने बोला था. Of course, Mitoma, Bowen, Saka, Bruno और Mbeumo. अगर आपके टीम में तो भाई रखिए. I think they can still score you enough points. Do not change them. But again, Newcastle, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Luton, Burnley को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए इफ यू आर गेटिंग अ ट्रांसफर इन. मैन सिटी, ब्राइटन, क्रिस्टल पैलेस और वेस्ट हैम के थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने बोला हालैंड को कैप्टन मत बनाइए ओनली फॉर दिस गेम वीक. तो भाई दिस वाज अ पॉइंटर्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स. बट यस, बाय द वे आर्सेनल के साथ चेल्सी का भी मैच है ब्रो कमिंग अप. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई थिंक गेम वीक 9 में शायद, देखते बात करेंगे, विल डेफिनेटली स्पीक. बट गाइस जो भी यहाँ पर आया और अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया भाई, वुड लव टू नो व्हाई. Just the press of a button. अगर आप सब्सक्राइब नहीं, if you're watching, it's always a fan channel for all to see. Definitely try and make us get to that 11K. But more importantly, अगर आप बेल आइकॉन दबाए नहीं हो, YouTube tells me भाई काली 12-13% बेल आइकॉन दबाए तो आपको पता नहीं लगता है when we put some other content like shorter videos, shorts and other things. वो आपको कब मिलेगा? जब आप बेल आइकॉन दबाएंगे, आप लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली YouTube आपको बताएगा. Again, we'll always be there no matter what. Tomorrow शायद हम लाइव हो later tonight on Almighty Sports भी. हमारे दूसरा चैनल Almighty Sports is also having membership and subscription free. Absolutely guys, you can check out at least the membership is almost free as well on both the channels. बहुत कम रखा है हमने for a reason for now. लेकिन आप लोग you can participate in a membership, a members prediction league जो member आप कल देखोगे मैसेज इन द कम्युनिटी पोस्ट. लेकिन आज शायद हम रिव्यू करेंगे मैच का, लेकिन अभी के लिए वी आर गोइंग टू जॉइन बाबा ऑन हिज चैनल. तो बिग अप टू एवरीवन हु जॉइंड. और मैंने बहुत स्टार किए थे क्वेश्चंस. I've taken some, I may not have taken some. Apologies if I have not been able to. लेकिन आप लोग, I hope you have liked the stream and of course you love the content. Always open to feedback. Again, follow us below in our socials. अगर FPL का कुछ particular doubts है, feel free to DM me. डेफिनेटली. हाँ, बॉटमैन का मैंने हाई बोला है. आई हैव सेड इट यस, बट आई कैन रीकन्फर्म दैट. आप मुझे डीएम करिए फॉर अ रिमाइंडर और मैं आपको चेक करके वापस बता दूंगा. स्वर्णदीप, अगेन डेडलाइन कल है तो अभी वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे टिप्स एंड पॉइंटर्स याद रखें. डेफिनेटली आई एम ट्रस्टिंग दैट you guys are trusting, or trust me, it'll work this time. चलो guys, see you, love you all and see you at Baba stream and Almighty Sports. I think we'll be live शायद 11 बजे on Almighty Sports, लेकिन अभी 8:30 बजे on Baba channel. See you guys, big up. अब द चेल्स नो मैटर व्हाट, दिखा दो यार, दिखा दो. हमने जीतना है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आई नो गोइंग थ्रू टफ टाइम. ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड या, फुटबॉल इज बैक गाइस. एंजॉय मिलान डार्बी भाई, एसी मिलान जीत जाओगे.